Good morning, students. Today we are going to start chapter 1 Geography, Resources and Development. Resources. What are resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable that can be termed as resources. क्या है resources? जो भी चीज हमारे नेचर में एबेंडेंस में है, चाहे वो ह्यूमन हो, ह्यूमन मेड या नेचुरल या बायोलॉजिकल, that can be used for the formation or satisfying our particular needs with the help of technology and can be economically easily available and culturally acceptable can be termed as a resource. Now, see, human beings carry out an interdependence relation with nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. ह्यूमन बींग्स क्या करता है, नेचर से ये चीजें डिराइव करता है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल. With the help of technology, it carry out the processing of a product. With the help of institution, it carry out a raw material into a finished product. So these three things are interrelated as well as interdependent with each other to carry out an economic development. Economic development क्या है? Development that takes place in a particular nation. Like अगर चीजें बिकेंगी एक नेशन की तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, हेल्थ सेक्टर इंक्रीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. So economic development carry out a major part in the development of resources in a country. Now we can see the classification of resources. Resources, it is always asked in board exam that how our resources are divided. So resources are divided into two, natural and human made. Natural are renewable and non-renewable. Human are structure and institution, quality and quantity. Now, what are renewable resources? Anything which can be renewed again and again can be said as renewable resource. A continuous flow, example wind, water, etc. Non-renewable resources are recyclable, example metal. Non-recyclable, example fossil fuels. Now this is a small and very effective diagram, that is biotic and abiotic. For the resources we carry out two components, biotic and abiotic. What are biotic? Biotic are all the living organisms, that is plants, animals, organisms. Abiotic, water, soil, light. Now, on the basis of origin, biotic resources are obtained from biosphere. Biosphere means where plants and animals live together, which have life. Example, human beings, flora, water flora, plants, fauna, animals, fisheries, aquatic plants, animals, livestock. Livestock are all the animals which are carried out to give milk and which is kept in the shelters, that are buffalo, cow, goat. Abiotic resources composed of non-living things. Now, this diagram is divided into two, biotic factor and abiotic, so that it can be easily accessible to you all. Now, on the basis of exhaustibility, see, renewable resources like sun is carried out for solar energy, here wind energy, here for water, and exhaustible like battery, petroleum, coal, fossil fuels, one exhausted cannot be renewed again. Now, this is a diagram to show you the renewable resources. Now, on the basis of ownership, see, it is divided into four types: individual, community owned, national, international. So, we have to understand this concept. Individual क्या है?
मेरी प्रॉपर्टी, मेरा खेत, मेरी एक वेल, तो ये एक मेरा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो ये आएगा हमारे इंडिविजुअल ओनरशिप में। कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई मंदिर है, कम्युनिटी हॉल है, पार्क है, तो ये आएगा कम्युनिटी में। नेशन, पूरी एक कंट्री, सपोज इंडिया का वेल्थ है, लाइक हमारे यहाँ पर कोल, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो ये एक नेशनल इकोनॉमी है एंड इंटरनेशनल। सो नाउ वी विल सी दिस सब डिविजन। Individual resources are the resources that are owned privately by individual. Example, land owned by the farmer allotted by the government against the payment of revenue. Plantation, pasture lands मतलब खाली land, ponds, water in well owned by individual. तो प्लॉट इंडिविजुअल का, हाउस, कोई भी प्रॉपर्टी ओन बाय द पीपल इन द सिटी आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। तो इसका मतलब ये है किसी भी व्यक्ति की खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी या लैंड, पॉन्ड, वाटर वेल, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। ही कैन टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। नाउ कम्युनिटी रिसोर्स, community resources are accessible to all the member of community. कोई भी उस कम्युनिटी का है या कोई भी अगर एक कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट का है कोई रिसोर्स, वो जगह जहाँ पर वो कॉमन है, एक वहाँ पर पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, प्लेग्राउंड है, तो वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओन हो जाता है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स है ना। नेशनल रिसोर्सेज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू अ नेशन। सारी प्रॉपर्टी जो कि एक नेशन होल्ड करती है एंड दे गिव सर्विसेज टू द पीपल विदाउट बीइंग बायस्ड आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज लाइक रोड, कैनाल्स, रेलवे एक्सेट्रा, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, टेरिटोरियल, water and the resources within. Now, the term territorial water, sometimes it is asked and for 1 marks, refers to the oceanic area up to 12 nautical miles, 19.2 kilometer from the coast. The country has legal power to acquire even the private property for public good. Urban development authorities get empowered by the government and the land. Now, what are international resources? Sometimes it is also asked for 1 marks. It's a very important question. What are international resources? International resources are regulated by certain international institutions. The oceanic resources beyond 200 kilometers of the exclusive economic zone, which belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the co-occurrence of international institutions. India had to obtain the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean, an area which lies beyond the exclusive of economic zone. Now see, this is a small diagram that will help you to understand what is an individual resource. See, a property owned by a particular person, individual resource. A park for a community resource. National resource like train that can be used by each and every one across the country, and in international resource like the ocean, from ocean belt zone of 200 nautical mile from the base and sea height. Now, on the basis of the development, see, it is also a very important topic that how can we carry out the resources on the basis of their development. So there are 2 types of resources, potential and developed resources. See, we have to understand the topic potential resource. अभी तो हमें पता चल गया कि resources क्या है, human made, man made जो कि कहते हैं, या natural. पर पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं है उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने की, या हमारे पास एक टेक्निक नहीं है उसको यूटिलाइज करने की, पर वो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में हमारे पास विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की लिमिटेशन के कारण
उस रीजन में हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो वी आर हैविंग अ पोटेंशियलिटी टू यूज बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दीज नेचुरल रिसोर्सेज. एंड द डेवलप्ड रिसोर्सेज मीन्स कि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, हमने एक प्रॉपर प्लानिंग करी उन रिसोर्सेज की. विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर प्लान वी आर एग्जीक्यूटिंग एंड वी आर मेकिंग दीज रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन अ नेचुरल फिनोमेना. एंड ये डेवलप रिसोर्सेज है प्लान सिस्टमैटिक वे में यूज हो रहे हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. तो हम एक बार इसको भी पढ़ के देखते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज फाउंड इन द रीजन व्हिच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. एग्जांपल, विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पोटेंशियल in the states of Gujarat and Rajasthan. Or developed resources are the resources which have been surveyed and determined for the utilization both qualitatively and quantitatively. The development of resources depend on technology and the level of feasibility. तो क्या है, क्वालिटी भी जरूरी है, क्वांटिटी भी जरूरी है, टेक्निकल लेवल पे फिजिबिलिटी भी ज्यादा जरूरी है, इनकम होना जरूरी है. अगर रिसोर्सेज अगर हम उनको मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं तो कम से कम उनमें प्रॉफिट होना तो जरूरी है. कि अगर मैन पावर, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, हम उसमें अपना कम्युनिकेशन सेक्टर लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, लेकिन हमें उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उस प्लानिंग में, तो दैट विल बी अ वेस्ट. तो अगर कोई भी चीज डेवलप हो रही है तो उसमें एक इनकम, प्रॉफिट की भी जरूरत है. Organization should be carried out in a profit sense, for a profit, and it will be said as a profit organization. Now, here also we have to understand two things, stock and reserve. This is also very important. See, stocks refers to the material in the environment which have the potential to satisfy human needs. But human beings do not have the appropriate technology to access these. Example, water is a component of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which could be used as rich sources of energy if we had required the technical know-how. Hence, it is considered as stock. See, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो एक ऐसा स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, और इट शुड बी यूटिलाइज्ड. क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया इज अ ग्रोइंग सेक्टर एज वेल एज हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मटेरियल अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है, और इन स्टॉक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Reserves are the subset of the stock which are yet to be put into use with the help of existing technical know-how. These can be used for meeting a future requirement. Example, river water can be used for generating hydroelectricity. Presently, it is being utilized only to a limited extent. The water in the dam is a reserve which can be used for future. See, reserves are in abundance like coal, steel. We are having it, but we cannot derive it and overutilize it because we have to keep these reserves for a future generation. तो अगर हम कोई चीज का ओवर यूटिलाइजेशन बार बार करते रहेंगे तो वो चीजें एक्सटेंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी. तो हमें एक ऐसी प्लानिंग करनी है जिसमें ये स्टॉक और रिजर्व्स को हमें ऐसे प्लान्ड फॉर्म में बना के रखना है कि हम अभी तो इसका यूज करें, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर एक्सेसिव यूज ना करें, और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको बचा के रखें और छोड़ें. Now, problems created by indiscriminated use of resources by man. This is very important and it always comes in board examination. Many resources got depleted. Example, forest. See, due to the over-utilization of resources, now the resources are getting depleted day by day. Example, forest. Second, resources got accumulated in the hands of few people. The society is divided into rich and the poor.
Third, global warming, ozone layer, depletion, environmental degradation and other problems. So you have to learn these 3 points कि इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण क्या 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज आर गेट डिप्लीटिंग, दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. एग्जांपल फॉरेस्ट. Now due to the deforestation, now forest land is being abandoned. Second thing is that resources कुछ लोगों के हाथ में ही है, so that richer are getting more rich due to the overutilization of resources, due to the exploitation of environment, and poor are getting more poorer. Now, due to this, forests are being destroyed and resources has been accumulated. Global warming is a major problem in today's 21st century. Ozone layer depletion, ozone layer is getting depleted due to the air pollution, environmental degradation, environment has been degrading due to the over exploitation of resources and environment, and these are causing major other problems. Now I will start next topic and another in another CD.